मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज यूरेनियम क्वेस्ट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई डील साइन की है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अंदर, जिसको 12 साल पहले साइन किया गया था। एक्चुअली अभी ऑपरेशनलाइज हो रहा है। ये डील जो है वो लॉन्ग टर्म यूरेनियम एग्रीमेंट्स जो कनाडा और कजाकिस्तान के साथ किए गए हैं उन्हीं के ही तरह से कॉन्टिन्यूएशन है। अब जो वॉल्यूम ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड जो इंडिया को सप्लाई किया जाएगा और ड्यूरेशन जो एग्रीमेंट की है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं पब्लिकली। अब क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इंडिया का एम है कि हम सिविल न्यूक्लियर के पावर कैपेसिटी 100 गीगावाट्स तक पहुंचाएं बाय 2047। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो टाइटली रेगुलेटेड सिविल न्यूक्लियर सेक्टर था उसको ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए भी ओपन कर दिया है। अब यूरेनियम होता क्या है? यूरेनियम को सेवरल प्रोसेसिंग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है बिफोर उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकें। इंडिया के जो इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं वो नेचुरल यूरेनियम पर रन होते हैं एज सोर्स फ्यूल, और उसके लिए हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स दोनों पर डिपेंडेंसी चाहिए होती है। अब एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो इंडिया के 2 लाइट वाटर रिएक्टर प्लांट्स में, खासकर तारापुर और कुडनकुलम में यूज़ होता है। वो हाईली इंपोर्टेड है, मतलब इंटायरली इंपोर्टेड है। और इंडिया का जो यूरेनियम ऑक्साइड रिजर्व्स है वो लगभग 4.3 लाख टन है। जो स्टेट ओन्ड कंपनी है UCIL, उसके पास मैंडेट है माइन करने का और प्रोसेस करने का यूरेनियम। लेकिन इन रिजर्व्स के बावजूद इंडिया की सिर्फ 2.4 गीगावाट की जो रिक्वायरमेंट है यूरेनियम हमारा पूरा कर पाता है डोमेस्टिक सोर्सेज से। जो हमारी टोटल कैपेसिटी जो न्यूक्लियर डिमांड है हमारी वो है 8.7 गीगावाट की न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारी। अब इंडिया को इंपोर्ट कैसे अलाउड है? 2008 में इंडिया जो है NSG, जब इंडिया ने को जो NSG ने क्लीन वेवर दिया और इंडिया को अकेली कंट्री ऐसी बनाया दुनिया की जिसको, जो कि NPT की मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी उसको जो है ये इंपोर्ट अलाउ किया गया। 2008 से 9 और फिर 2024 से 25 के बीच में अगर हम देखें तो इंडिया ने लगभग 18,000 प्लस मैट्रिक टन्स ऑफ यूरेनियम इंपोर्ट किया है। इंडिया करंटली इंपोर्ट करता है यूरेनियम रशिया और उज़्बेकिस्तान से। कैम्को ग्रुप, जो कैम्को कॉर्प है कनाडा की, उसने $2.6 बिलियन का सप्लाई एग्रीमेंट मार्च में हमारे साथ साइन किया है। ऐसे ही काजाटोम्प्रोम, ये कजाकिस्तान का जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है। इसके साथ भी सिमिलर डील फरवरी में हमने साइन की है। फ्रांस भी जो है हमें यूरेनियम ओर्स और कंसनट्रेट्स जो है वो सप्लाई करता आया है, और US भी जो है सिमिलर हमारे इंपोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब कोर रीज़न हम क्यों इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो माइनिंग और प्रोसेसिंग करनी होती है डोमेस्टिक यूरेनियम की, और डोमेस्टिक यूरेनियम को और कंसनट्रेट बनाने में उसकी कॉस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा आती है अगर हम उसको हमारे इंपोर्ट की कॉस्ट से देखें तो। इसलिए जो है हमारे को जो है हम इंपोर्ट ही बढ़िया रहता है। और इंडिया जो है वो ये भी कंसिडर कर रहा है कि कैसे डोमेस्टिक यूरेनियम प्रोडक्शन को भी एनहांस किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DGMA जो है उन्होंने शिप ओनर्स को कहा है कि वो इंडियन सी फेयरर्स को उन वेसल्स पर मत अलाउ करें जाना जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहे हैं। तो ये DGMA क्या है? एक एपेक्स मैरीटाइम अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो 1949 में एस्टैब्लिश हुई थी। अटैच्ड ऑफिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का। ये सभी तरह के एग्जीक्यूटिव मैटर्स जो मर्चेंट शिपिंग से रिलेटेड है उनसे डील करती है, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टरेट जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल शिपिंग पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन। ये मैरीटाइम एजुकेशन ट्रेनिंग जो है इन कोऑर्डिनेशन विद IMO भी देता है। रजिस्ट्रेशन, सर्वे एंड सर्टिफिकेशन ऑफ वेसल्स, एग्जामिनेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स, ये सब भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो NSE जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं। एक तरह से न्यू एक्सचेंज ट्रेडेड सेगमेंट है ये, बाय और सेल करने का गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो EGR जो है बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ हैं जो ओनरशिप ऑफ फिजिकल गोल्ड को, जो कि सेबी रेगुलेटेड वॉल्ट्स में स्टोर्ड है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिकली डीमैट अकाउंट में बाय या सेल किया जा सकता है डिफरेंट डिनोमिनेशंस में। अब इसमें जो है शेयर्स की तरह ही जो है T+1 इन्वेस्टमेंट साइकिल फॉलो होती है, सेटलमेंट साइकिल फॉलो होती है, जिसमें कि रिसीट्स जो है वो बायर्स के डीमैट अकाउंट में अगले दिन जो है वो डाल दी जाती हैं। अब इसमें कौन कौन इन्वेस्ट करता है? रिटेल इन्वेस्टर्स, ज्वेलर्स, बुलियन ट्रेडर्स, डिफाइनर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है। अब ये 2 प्योरिटी स्टैंडर्ड्स में अवेलेबल है, 999 और 995। अब जो लोग फिजिकल गोल्ड प्रेफर करते हैं वो इन EGRs को फिजिकल गोल्ड में भी जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़े।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नमस्ते स्कीम। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ने जो है उन्होंने नमस्ते स्कीम के बारे में बताया है। ये स्कीम एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, ताकि हम ट्रांजिशन कर सकें मैकेनाइज सैनिटेशन का अक्रॉस द कंट्री। इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। अब इसका एम है एलिमिनेट करना हजार्डस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब इसका मोटिव है जीरो फैटेलिटीज इन सैनिटेशन वर्क। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम ऑफ वर्ड रिसेंटली ओपन हुआ है नेशनल लाइब्रेरी में। इसका नाम है शब्दलोक। नेशनल लाइब्रेरी कैंपस जो है कोलकाता में इसे लॉन्च किया गया है। वहाँ पर इसको डेवलप किया गया है नेशनल लाइब्रेरी द्वारा अंडर यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री। ये कंट्री की जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है उसको शोकेस कर रहा है, एवोल्यूशन दिखा रहा है ओरल और रिटन ट्रेडिशंस का थ्रू इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जिबिट्स। शब्दलोक जो है सेलिब्रेट करता है इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मंगल पांडे। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए, हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है उन्होंने ट्रिब्यूट्स पे किए हैं रेवोल्यूशनरी मंगल पांडे जी को। तो मंगल पांडे जो है वो एक ब्रेव इंडियन सोल्जर थे ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा। इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया था 1857 में, और इसको कहा जाता है अर्लीस्ट ट्रिगर था ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इनको बाद में हैंग टू डेथ कर दिया गया बारकपुर में, और ये तब सिर्फ 29 साल के थे जब इनको एग्जीक्यूट किया गया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नारवाड़ फोर्ट। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक ओवरनाइट थेफ्ट हुआ है मध्य प्रदेश के नारवाड़ फोर्ट में, जिससे अथॉरिटीज़ जो है स्क्रैम्बल हो रही हैं, क्योंकि एक सिंधिया टाइम के कैनन को जो है वो चोरी कर लिया गया है आर्म्ड गैंग द्वारा। तो नारवाड़ फोर्ट एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, विंध्या रेंज के ऊपर। माधव नेशनल पार्क इससे बहुत ही पास में पड़ता है। नारवाड़ टाउन जो है वो इस फोर्ट के नीचे आता है, और वो एक कैपिटल था। राजा नाला जो संस्कृत एपिक महाभारत तक के टाइम पर थे, उनकी कैपिटल था। और इसको कछवाहा राजपूत ने 10th सेंचुरी में इस फोर्ट को बनाया है, और इसको बाद में मराठा चीफ सिंधिया जो है उन्होंने अर्ली 19th सेंचुरी में कॉन्कर कर लिया था। जो आर्किटेक्चर है इसका राजपूत स्टाइल में है, फ्लैट सीलिंग्स, फ्लूटेड कॉलम्स, मल्टीफोर्ड आर्क्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एरएलसी। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो एरएलसी है वो ड्राई होता जा रहा है, उसकी वजह से 200 टेराग्राम्स ऑफ कार्बन जो है वो लेक बेड सेडिमेंट से रिलीज हुई है एटमॉस्फेयर में। मतलब एक तरह से एक्टिव सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बन चुका है। तो एरएलसी जो है एक सलाइन लेक है सेंट्रल एशिया की, जो कि उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान की बाउंड्री पर आती है। और ये एक टाइम पर लार्ज सॉल्ट वाटर लेक थी सेंट्रल एशिया की, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बॉडी ऑफ इनलैंड वाटर। और इसको जो है सीर दरिया और अमू दरिया रिवर्स से बना था। एरएलसी जो है वो लोकेटेड है हार्श क्लाइमेट रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया के, और एक तरह से डेजर्ट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है। ये लेक जो है वो श्रिंक होनी शुरू हुई थी 1960s में, जब सोवियत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस सेर दरिया और अमू दरिया के वाटर को डाइवर्ट करके सराउंडिंग डेजर्ट रीजन को इरीगेट किया जाएगा। और अब ये जो है वो लगभग कंप्लीट डिसअपीयरेंस के वर्ज पर आ चुकी है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India's uranium quest. This topic is important for your economy and science and tech section. So India has secured a long-term uranium supply deal with Australia, and this has marked a key step towards operationalizing the India-Australia Civil Nuclear Cooperation Agreement, which was signed nearly 12 years ago. And this deal follows similar long-term uranium agreements with Canada and Kazakhstan. So while the volume of uranium oxide to be supplied and the duration of the agreement have not been disclosed, this deal is a part of a broader strategies to secure fuel amid India's ambitious nuclear expansion plans. So India has an aim to expand its civil nuclear capacity to 100 gigawatts by 2047, and last year the government opened the tightly regulated civil nuclear sector to greater private participation to support this goal. Uranium, of course, it's a common element found worldwide, but it requires several processing stages before becoming usable nuclear fuel. So India's indigenous pressurized heavy water reactors, which run on natural uranium, source this fuel through a mix of domestic production and imports. In contrast, enriched uranium, which is used in India's two light water reactors, Tarapur and Kudankulam, it is entirely imported.
India's uranium oxide reserves stand at about 4.3 lakh tons, and the state-owned UCIL holds the mandate to mine and process this uranium. So, despite these reserves, domestic sources meet just the uranium requirement for only 2.4 gigawatts of India's total 8.7 gigawatts of nuclear capacity, and the rest depends on imports. So, India is able to import uranium because it was unlocked in 2008 when the NSG gave it a clean waiver, making India the only non-signatory to the NPT to enjoy such trading privileges. Between 2008 and 2024, India imported about 18,000 plus metric tons of uranium. Okay, India currently imports uranium from Russia and Kazakhstan. Uzbekistan. So, Kazatomprom, which is the world's largest uranium producer, agreed in February to sell a substantial volume to India. Okay. Similarly, Camco Corp signed a $2.6 billion supply agreement with India in March. This is basically from Canada. France has also supplied uranium and ore concentrates to India, while US has also supplied similar imports. So why are we dependent on imports? Because mining and processing domestic uranium into ore concentrate cost 3 to 4 times more than importing it internationally, largely due to the poor grade of uranium ore found in India. And it is also being recommended by Ministry of Power that we enhance our domestic uranium production as well. So the next topic is Directorate General of Maritime Administration. This topic is important for your governance section. Directorate General of Maritime Administration has directed ship owners to avoid deploying Indian seafarers on vessels undertaking voyages through the Strait of Hormuz. So DGMA is an apex maritime authority of the Government of India, which was established in 1949. It is functioning as an attached office of Ministry of Ports. It deals with all executive matters relating to merchant shipping. So it has its headquarters in Mumbai. It is responsible for the implementation of national shipping policy and legislation. It is responsible for the promotion of maritime education and training in coordination with the IMO. It extends to the its mandate extends to the registration, survey, and certification of vessels, examination and certification of merchant navy officers as well. So the next topic is electronic gold receipts. So this topic is important for your economy section. So, National Stock Exchange of India has introduced electronic gold receipts, which is a new exchange traded segment for buying and selling gold in electronic form. So, electronic gold receipts are exchange traded securities representing the ownership of physical gold stored in SEBI regulated vaults. They can be held electronically in a demat account, bought and sold in different denominations on the ports, and converted into physical gold via prescribed process. So like shares, EGRs also follow a T+1 settlement cycle, with the receipts credited to the buyer's demat account for the next trading day. So retail investors, jewelers, bullion traders, refiners, institutional investors, and other eligible market participants can buy these EGRs via registered brokers, stock brokers. So EGRs are available in two purity standards, 999 and 995. So those who prefer physical gold can convert these EGRs into gold whenever needed. So the next topic is Namaste scheme. This topic is important for your social issues. Union Minister of Social Justice has highlighted the Namaste scheme. So it's a social security scheme for sanitation workers while accelerating the transition towards mechanized sanitation across the country. It is jointly implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs. The aim is to eliminate hazardous manual cleaning of sewers. It is implemented by the National Safai Karamcharis Finance Development Corporation, and it has its aim for zero fatalities in sanitation work. So the next topic is India's first immersive language museum. This topic is important for your art and culture section. So India's first immersive language museum, the Museum of Word, was recently opened at National Library, Kolkata. So its name is Shabdalok, and it has been developed by the National Library under the Union Culture Ministry. It showcases the country's linguistic heritage and traces the evolution of oral and written traditions through interactive technology-driven exhibits. Shabdalok celebrates India's 22 official languages. Okay. So the next topic is Mangal Pandey. This topic is important for your history and art and culture section. So PM Modi recently paid tributes to the great revolutionary Mangal Pandey ji on his birth anniversary. So he was a brave Indian soldier during pre-independence era. So his attack on British officers is widely in 1857 is widely regarded as one of the first triggers of the revolt of 1857. He was hanged to death in Barakpur, and when he was executed, he was just 29 years old.
So the next topic is Narwar Fort. This topic is important for your art and culture section. So a daring overnight theft at Madhya Pradesh Narwar Fort has left authorities trembling after a 3000 kg Scindia era cannon was recently stolen by an armed gang. So Narwar Fort is a historical fort located in the Shivpuri district of Madhya Pradesh. It is spread atop the Vindhya range. Madhav National Park is located a short distance to the west. So Narwar town, which lies below this fort, is said to have been the capital of Rajanala of Sanskrit epic Mahabharat, and it was called Nalapura until 12th century. So this Narwar fort was constructed by Kachwaha Rajputs in 10th century, and it was conquered by the Maratha chief Scindia in early 19th century. So the architecture of the fort and palaces is basically Rajput in style with flat ceilings, fluted columns, and multifold arcs. Okay. So the next topic is LLC. This topic is important for your international relations and environment section. So dying of the LLC has released more than 200 teragrams of carbon from exposed lake bed sediments, turning a once stable carbon reservoir into an active source of greenhouse gases. So LLC is a saline lake in Central Asia straddling the boundary between Uzbekistan and Kazakhstan, and it was once a large saltwater lake in Central Asia, and it is the world's it was the world's fourth largest body of inland water. It was made by waters from the Sir Darya and Amu Darya rivers. The LLC is located within the harsh climate of Central Asia. This area experiences a desert continental climate. This lake started shrinking in 1960s when the Soviet government decided to divert the Sir Darya and Amu Darya river waters to irrigate the surrounding desert region. Today, this lake is on the verge of complete disappearance. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.